Hi. So I think we are meeting after a very long time. I think there has been a 2 month long break since my last video, and I'm sorry for the delay, but I had a lot of work at hands which I had to complete within the last 2 months. So now we'll start from where we left off. तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी से हमें स्टार्ट करना था. So today we'll start from there and आज मैं 3 सब्जेक्ट्स कवर करूँगी: नेटवर्क थ्योरी, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड मटेरियल साइंस. तो आज के वीडियो के बाद मुझे आपसे एक बात भी करनी है रिगार्डिंग माय हैंड रिटन नोट्स. तो उसके लिए अभी आप वीडियो देखिए और लास्ट में मैं आपसे उस बारे में बात करूँगी. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले. So this presentation is the first part of subject-wise strategy and presented by me, Shambhavi Tripathi. अगर आप लोगों को इस चैनल के बारे में जो भी अपडेट्स हैं वो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेन एवर द न्यू वीडियो इज़ अपलोडेड. सो आई ट्राई टू ऑल्सो मेक वीडियोज़ रिगार्डिंग IRMS बिकॉज बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं उसके बारे में कि उसकी वजह से एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस होंगे, वैकेंसीज़ में कितने चेंजेस होंगे. तो एज एन व्हेन मुझे इस बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आई क्रिएट वीडियोज़ ऑन दैट एज वेल. सो लेट अस स्टार्ट. पार्ट 1, एज आई सेड दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. इसमें ये 3 सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं: नेटवर्क थ्योरी, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड मटेरियल साइंस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद नेटवर्क थ्योरी. So network theory is a very important and a basic subject for all the electrical engineering students. Clarity in network theory is a fundamental requirement for various other subjects as well. And I had prepared extensive notes for this and I used those notes as my basic sources. So for network theory, what you have to know is that you must know how to solve the same question according to different methods because the maximum marks of the question will keep varying and according to that you have to adjust your method. Okay. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट नेटवर्क थ्योरी इज़ वो क्वेश्चंस तो हम लोगों सबसे सॉल्व हो जाते हैं बट उसमें टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को. सो दैट इज़ व्हाई आई हैव रिटन दैट कीप टाइम इन माइंड. ओके, बिकॉज समटाइम्स व्हाट विल हैपन, सिंपल क्वेश्चंस जिसमें आपको लूप करेंट्स निकालने हैं या फिर नोड वोल्टेजेस निकालने हैं, यू विल डेफिनेटली सॉल्व इट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट मे बी यू विल बी कंज्यूमिंग अ लॉट मोर टाइम इफ़ यू हैव नॉट डन इनफ प्रैक्टिस. दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट नेटवर्क थ्योरी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट लीव दिस सब्जेक्ट बिकॉज ये बहुत ही बेसिक है हमारे हर बाकी सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन के लिए. यू हैव टू बी वेरी थरो विद नेटवर्क थ्योरी. ओके, फॉर द सोर्सेज एंड सिग्निफिकेंस, सोर्सेज जो मैंने अप्लाई किए थे वो थे मेरे क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एक ए चक्रवर्ती की बुक है विच इज़ बाय द नेम ऑफ सर्किट थ्योरी एनालिसिस एंड सिंथेसिस, वहाँ से. एंड देन आई हैड ऑल्सो रेफर टू दिस बुक एमी वैन वॉल्केनबर्ग फॉर द टॉपिक्स लाइक साइनोसॉइडल स्टेट एनालिसिस, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स. वो बहुत अच्छे से इस बुक में दिए हुए हैं. एंड ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज. So significance is mainly for prelims and mains. Also, I must tell you that as a student, I have always trusted a lot in textbooks and मेरे कॉलेज टाइम से ही मेरे पास हर सब्जेक्ट्स की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक टेक्स्ट बुक्स होती थी वो मेरे पास कॉलेज के टाइम से ही थी. मैं ज़रूर उसमें इन्वेस्ट करती थी. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी कैन इन्वेस्ट इन. तो मैंने उन बुक्स का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया था कॉलेज के टाइम पे भी और अपने ESE प्रिपरेशन के टाइम पे भी. So I will be referring a lot of books here in this presentation as well, but that does not mean that आपको सारी ही लेनी है. अगर आपके पास टाइम sufficient है, for example if you are still in college, then of course you must buy it. There is no substitute for a good textbook because clarity से आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने तक का मोटिव नहीं है, आपको उसमें आगे भी जाना है, सर्विस के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है. So you should have a clarity in your mind. And that is, textbooks are the best way for that clarity. But in case you don't have much time left, then I would not suggest that आप सारी बुक्स खरीदें अभी और सबके थ्रू जाएं. बट आप वाली ज़रूर ले सकते हैं जिसमें कि अगर आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उसके लिए आप टेक्स्ट बुक्स ज़रूर ले सकते हैं. तो यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़े से एक सैम्पल्स दिखा देती हूँ कि मेरे नोट्स कैसे थे और मेरे टेक्स्ट बुक्स में से मैंने कैसे पढ़ाई करी. इसके लिए मैं आपको हर सब्जेक्ट के साथ उससे रिलेटेड नोट्स और टेक्स्ट बुक्स के कुछ वीडियो फुटेज मैं आपको दिखा देती हूँ. ओके, दीज आर माई नेटवर्क थ्योरी नोट्स. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे नोट्स एकदम नीट होने चाहिए, एकदम ऑर्डर में होने चाहिए. वी हैव टू कम बैक टू आवर नोट्स ऑल द टाइम. सो यू हैव टू हाईलाइट द नोट्स. आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस तक अपने नोट्स ही यूज़ होंगे सबसे ज़्यादा. तो बहुत ज़रूरी है कि आपके नोट्स डायनेमिक होने चाहिए. जो भी नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है थ्रू टेस्ट सीरीज़ या फिर क्लास में या फिर टेक्स्ट बुक से, वो आपको अपने नोट्स में एडअप करती रहनी है. तो मैंने भी अपने नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था. मेरे सारे ही सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं
हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्डरली फैशन में मैंने बनाए थे. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन टू मेंटेन वेल रिटन नोट्स. This is the first book for network theory, which is circuit theory, analysis and synthesis by A.K. Chakravarty. तो इसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पे IES का पूरा सिलेबस वर्ड बाय वर्ड लिख रखा था फॉर फ्यूचर रेफरेंस. एंड यू कैन सी दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक, जो कि बहुत ही कायदे से कैटेगराइज करे गए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स. तो इस बुक में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इतने सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं और मैंने भी उन्हीं पे फोकस किया था इनमें सबसे ज़्यादा. मैं जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लगा सकती थी मैंने उतने लगाए थे. इसके अलावा ये डेरिवेशंस भी हैं, जो मैंने कई सारे डेरिवेशंस यहाँ से याद करे थे जो मुझे कई क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम आ गए थे. तो हम लोगों को ये देख के लग सकता है कि ये बुक बहुत बड़ी है, बट ऐसा नहीं है. इसमें आप जितना पढ़ेंगे उतनी आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी. मैंने इसमें से थ्योरी की भी लाइन्स अंडरलाइन कर रखी हैं, ये भी मैंने यहाँ से याद करी थी फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस. So all in all, this is a very very good book for network theory, and it will give you ample practice before the exam so that आपकी concept clarity exam तक बहुत अच्छे से build up हो जाएगी. This is the next book, which is Network Analysis by M.E. Van Valkenburg. ये बुक भी मेरे पास कॉलेज टाइम से ही थी और इस बुक में कुछ टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल और equations of first order, then initial conditions in network, then Laplace transforms, then you will have two-port networks, you have impedance functions, sinusoidal steady state analysis, we have Fourier series, Fourier transforms, and input power, power transfer, and insertion loss. So these are some very important topics from here. द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस बुक इज़ कि इसके एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल के हैं. अगर आपने इसकी सारे प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल सॉल्व किए, इसका मतलब आपको पूरी तरह से सब्जेक्ट आ गया है. एंड यही मैंने किया था. कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने पूरे उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप के जो टॉपिक्स थे उनके लिए. देन जैसे ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, ये भी बहुत अच्छे से दिया है. इसके कुछ एग्जांपल्स इतने अच्छे लेवल के हैं कि उससे आपकी सारी क्लैरिटी आ जाती है. देन दिस इज़ ट्रांसफॉर्म्स ऑफ अदर वेव फॉर्म्स, ये सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के लिए भी काम आता है. And these are some very good examples about two-port parameters. So all in all, this is a wonderful book written by a foreign author. इस book की language, contents and everything are just perfect. Alright, so moving on to the second subject, which is of microprocessors. So microprocessors had been my one of the most favorite subjects during college, and I really enjoyed studying this, and I was actually fascinated by it. So my basics were clear in it during college only, and my interest was also much developed. I was especially very comfortable with 8085 and its instruction set and memory management. But the tricky areas for me were like in 8086, the peripheral devices as well as the interrupts. But all my difficulties in this topic were cleared by the very good textbooks that we have on this subject, and I'll mention them also. So for this, as I said, for microprocessors, textbooks was my most primary source, and they were enough for me to get hold of this subject. Also, I was ready to put in the extra input that you have to put in the subject in order to make it strong and actually gain marks from the subject. But I was very happy to do that because I had a lot of interest in this. In fact, even during जब मुझे questions select करने होते थे, so during question selection, I used to make a deliberate and conscious attempt to choose those questions which had questions of microprocessors in them. And the main importance of this subject is that it is very relevant in today's time. A lot of questions from microprocessor can feature in your interviews as well. Also in my MTech project, I had done an hardware implementation whereby I had used this Arduino Uno in my project, and so that's why also I was prepared for any question regarding microprocessor or microcontroller in my interviews, because of which मैंने इस subject की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था. So coming to the sources and the significance, so sources were the main books that I referred to were Ramesh Kaunkar for 8085. Complete 8085 can be done from this one book, and the other book that I referred was B. Ram. I referred this for 8086 as well as for certain peripheral devices. Then French topics from this subject I searched them on internet using basic Google search, and whatever the best results used to feature on page 1, like the first or second link used to suffice. And I also got a lot of stuff from previous year questions as well as test series. They also helped me a lot in this subject.
So significance, as I already said, it is very important for prelims, where you can, if you skip this subject, you will lose on very very simple prelims questions, for example, which will be related to the instruction set, or maybe how many bytes are occupied by any particular instruction, or some small program can be there and you have to find the output. So you should not leave this subject for prelims. Mains, it can be a lifesaver, and it can fetch you around 20 marks straight away by just writing a small program, or by just referring how many kinds of interrupts are there, how interrupts function. So it is very important for mains also. And as I said, it is very important for interviews also, because of the various practical applications and its relevance. ये मेरी माइक्रो प्रोसेसर की बुक है, रमेश काउंडकर की, और इसकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है इससे। तो इसमें जो कंटेंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, इसमें 8085 का पूरा इंस्ट्रक्शन सेट है, स्टैक्स, सब रूटीन, सब कुछ है। इसमें सारे इंटरप्ट्स के बारे में दिया हुआ है, और जितने भी इंटरफेसिंग डिवाइसेस थे वो भी दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने सिलेबस लिख रखा है, और इसमें मैंने हर चीज़ ही पढ़ी है। इसकी थ्योरी हो, इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं, इसमें जितने भी डायग्राम्स हैं, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी डिज़ाइनिंग है, सब कुछ मैंने इसी से पढ़ाई करी है, माइक्रो प्रोसेसर्स की। तो इसमें मुझे ये कहना है कि इसमें हमें कुछ बहुत सारे टॉपिक्स में हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, ये माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का एक चैप्टर है, तो इसमें जितनी भी आर्किटेक्चर और डिज़ाइनिंग की चीज़ें दी हैं वो और कहीं भी नहीं दी गई हैं। इसके अलावा ये जैसे प्रोग्राम्स हैं, तो ये प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ती जाती है। फिर ये एस्काई टू BCD कन्वर्टर है, ये BCD एडिशन, BCD सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम्स हैं। देन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंटरप्ट्स, जो कि एग्ज़ाम में भी आया था मेंस के। इसके लिए टाइमिंग डायग्राम्स और इंटरप्ट्स किस तरह फंक्शन करते हैं, इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। देन दिस इज़ द प्रोग्रामेबल पेरिफेरल डिवाइसेस, ये 8255 का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है पूरा। देन आफ्टर दिस यू विल फाइंड ऑल द मोड्स, जो भी स्क्वायर वेव जनरेटर और सारे मोड्स होते हैं क्लॉक्स के, उसके प्रोग्राम्स सब कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे। फ्लो चार्ट्स और टाइमिंग डायग्राम्स बहुत हर चीज़ के बनाए गए हैं। जैसे ये स्क्वायर वेव जनरेटर है, तो इसके लिए क्या प्रोग्रामिंग होती है वो है। देन दिस इज़ द 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर। देन वी हैव द 8237 DMA कंट्रोलर. So almost all the peripheral devices are given here. This is the most perfect book on 8085 microprocessor, and I highly recommend it to everybody. These are my microprocessor notes, बट जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ऑलमोस्ट सारी ही पढ़ाई बुक से ही करी थी, गाउनकर से। तो इसमें मैंने केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, या मैं जो बार बार भूलती थी, वही मैंने इसमें लिख रखे हैं। सो ये नोट्स मेरे काफ़ी ज़्यादा कंसाइज हैं, बट दे वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लास्ट मिनट रिविजन. Finally, I also want to show you this second book of microprocessor by B. Ram. So in this कुछ topics जो हैं वो बहुत ज़्यादा detailed analysis में दिए हुए हैं, स्पेशली जो 8086 है, और उसके अलावा जो बाकी के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जो एडवांस्ड लेवल के हैं, वो इसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं. इसके अलावा जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनके डायग्राम्स जो इसमें दिए हैं वो काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन्स हैं. तो अगर कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स हमें नहीं याद हो रहे तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं. सो ऑन एंड ऑन ये बहुत ही अच्छी बुक थी, जिसमें डिस्क्रिप्शंस और एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिए हैं. Alright, so coming quickly to the third subject, which is material science. So the importance of material science has increased a lot after the pattern change in 2017. And for material science, the most important things are theory and derivations. You have to practice them so many times, and revision is a must for this subject, especially after 3-4 days. Otherwise, you will tend to forget a lot very quickly. So apart from that, I have to mention that my notes were my most primary source of preparation for this subject. I have not referred to any other book except for one book which we kind of refer in college, goes by the name of Callister. But for that, I have to say that I did not get the output very much, and most of the things were either covered from my notebook or they were not covered from anywhere. And previous year questions were very helpful for me for this, especially the very old years around 2000 to 2003. And the main thing in material science is to gain concept clarity, especially in topics like dielectrics, magnetic materials, conductors, etc. And it will enable you to answer new type of questions, suppose they feature in the exam. So if your concepts are clear, you will be able to handle them very nicely. It will also help you with a lot of analytical skills if you understand what is actually happening inside. So it will also help you with a lot of analytical skills.
Now, as you all know, material science is also there in the GS paper, but there you have to prepare a certain amounts of extra topics. For example, mechanical properties of materials, ceramics, polymers, and all of that. So don't leave this subject at any cost. So this is one of the example of how the derivations are very important. This is the Maxwell relation which I've derived here. Then coming to the sources and significance. So as I said, for me the main source was class notes only, as well as the previous year questions. And the significance of this subject is mostly in prelims, where it features in GS paper also, as well as in technical paper also. But also you cannot ignore it in mains, because in 2019 when I gave the mains examination, in one of the question 4 of paper 1 was, there were I think 30, more than 30, or I think 40 marks of material science questions were there, which were very straightforward, and I think everybody has attempted question number 4 because of those questions only. So you can't leave material science at any cost. So these are my material science notes. As I said कि मैंने इसके लिए कोई और book refer नहीं करी थी. My notes were self sufficient for all the 3 stages of the examination. ये properly order fashion में थे, और इसमें numericals, definitions, diagrams और हर चीज़ मैंने इसमें अच्छे से neatly draw कर रखी थी. So these helped me right from prelims up until the last day of the interview. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसने मुझे GS में भी हेल्प किया था, बिकॉज उसमें भी हमारा मटेरियल साइंस वाला सब्जेक्ट रहता है. सो एज यू कैन सी, इसमें मैंने यहाँ पे दिखाया है कॉर्ड्स वगैरह का प्रॉपर डायग्राम, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ इसमें नोट्स ऐड भी करे थे. सो ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि इन सम सब्जेक्ट्स यू डोंट नीड टू रेफर एनी एक्स्ट्रा बुक, and if you make proper notes for prelims and mains, it will be sufficient for you. So this was all about the first 3 subjects that we had to cover in the subject wise strategy. And if you want to know more about my handwritten notes, so what happened is, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि they want to have my handwritten notes. So what, initially I was very reluctant, because I thought इतने सारे notes हैं, how should I distribute them, how should I create a PDF? It is very difficult to create a PDF out of those 300-400 pages notes. So anyway, I have done some work, and I'll show you. I'll attach a PDF on continuous time Fourier transform from signals and systems in the description below. I've created a PDF, so you all can see it, and you all can write it in the comments if you really want my handwritten notes. So I will prepare them, and the complete notes will be out very soon, and I'm preparing a website also for these kinds of things. So you can just go to my website and you can buy the complete notes from there. So I've prepared my notes very nicely. I've prepared them in a very meticulous manner, and I have added some extra points also, which I came to know after the examination, like in the previous 2-3 months. So I've added some extra matter also, which will be very beneficial for you. If you all want me to upload my notes, then please write it in the comment section, and I will definitely try to do that. And you can buy the notes, you can buy the complete notes of all the subjects from there itself. It will help you a lot, I believe, and especially in these times when we can't go to classes and we don't know when the situation will be better. I think it will be very helpful for you. And in the next video, we'll cover the 3 subjects of control systems, measurements, and computer fundamentals. So don't forget to watch that as well. And all the best to you for all the upcoming examinations. You guys have already completed prelims, and now mains is there for 600 marks, and then personality test is of 200 marks. So you should be well in the preparation mode. I know that the times are very difficult and very disheartening, but this is the tough time when you have to rise to the occasion. Do not stop working hard. So thank you for watching the video, and if you have any questions, please write them down in the comment section, and subscribe to my channel and hit the bell icon to receive all the updates about all the videos. Please stay home and stay safe. Bye.